अभी वर्तमान को देखना है या पहले भविष्य को देखना है? Now, should you see the present or the future first? श्याम से सुंदर उनका ही गायन है। Student, he alone is praised as the one who becomes beautiful from being dark. He is. लेकिन जो है उस पर हमारी आत्मा को निश्चय है कि माया का फाइनल पेपर आएगा तो डामाडोल हो जाएंगे। But does your soul have faith in whoever he is? Or will you shake when the final paper of Maya comes? ज्ञान तो सुनाने की चीज है, सुनने की चीज है। The knowledge is something that you can narrate or listen to. सुनना सुनाना तो बहुत कर लेते हैं। The children certainly listen to and narrate the knowledge a lot. लेकिन मुख्य बात है प्रैक्टिकल में टिके रहने की, अडिग रहने की, अचल अखंड अडोल रहने की या चलायमान हो जाने की। But is the main thing to stay constant, to be steady, to be determined, undivided and steadfast in practice, or is to become inconstant? है Student, to remain steadfast. Yes. ये जो भट्टी रखी जा रही है सप्ताह में एक बार, वो इसीलिए रखी जा रही है कि हमारी आत्मा कैसी बनी रहे। The bhatti that is being conducted weekly is held so that our soul, how should it be? अटल अखंड अडोल बनी रहे। It should be determined, undivided and steadfast. चाहे जैसा भी बम फूट जाए ग्लानि का, और चाहे जितने ही विस्तार रूप में संसार में फूट पड़े, उसकी ग्लानि का दुर्गंध हमारी आत्मा में कोई क्या प्रभाव नहीं डाल सके। No matter what kind of bombs of defamation explode, no matter how wide and far the explosion spreads in the world, the bad odor of its defamation shouldn't be able to influence our soul at all. अगर आत्मा प्रभावित हो गई If the soul is influenced, तो हम अनराइटियस ही साबित हो जाएंगे। we will certainly be proved to be unrighteous. फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। Then there won't be any margin. होल डाल हो जाएंगे। It will be a hopeless case. तो बाबा ने तो बता दिया, Well, Baba has certainly said, सब अनराइटियस है। everyone is unrighteous. फिर भी हमें क्या करना है? Still, what should we do? है और माया मौका देख करके बार करेगी या ऐसे ही बार कर देगी? Student, we have to become righteous. And will Maya look for an opportunity and attack, or will she attack just like that? अभी क्या देखने में आ रहा है? Students, she will look for an opportunity and attack. What is seen now? 15 अगस्त जन्माष्टमी के दिन से लेकर 1-2 दिन पहले से ही ये भट्टी का प्रोग्राम रख दिया। The program of Bhatti started from 2 to 3 days before 15th August, the day of Janmashtami in 2018. तो जब प्रोग्राम शुरू किया था तो बड़े उमंग उत्साह में थे। When the program began, there was great zeal and enthusiasm. संगठन की संख्या ज्यादा थी। The strength of the gathering was big. फिर अभी क्या होता जाता है? And what keeps happening now? है?
धीरे धीरे माया एक एक को पकड़ करके क्या धंधे धोरी की दुनिया में खींचती जा रही है। Maya is catching hold of everyone one by one gradually and is pulling them towards the world of business and occupation. सप्ताह में एक दिन का भी पूरा टाइम नहीं देते। They don't give even one full day's time in a week. कोई कोई तो ऐसे हैं लास्ट में आएंगे, ब्रह्मा भोजन करेंगे और ये चले जाएंगे। Some are such that they will come in the end, have Brahma Bhojan and leave immediately. और रजिस्टर में साइन हो जाएंगे। And they will sign in the register. लेकिन माया बड़ी हरखड़ है। But Maya is very powerful. पूरा बार कब करेगी? When will she attack fully? है जब अलबेला देखेगी संगठन को। When she sees laziness in the gathering. इसलिए इसी वाणी में This is why in this very Vani, जो पहले पहले वाणी चली है शुरुआत में, उसमें संगठन की शक्ति की बात बताई। in the very first Vani that was narrated in the beginning, the importance of the power of gathering was mentioned. और आज भी आजकल के अंदर जो अव्यक्त वाणी चली, And even today, the Avyakta Vani that was narrated recently, उसमें भी संगठन की शक्ति के लिए विशेष इशारा दिया है। a special hint was given for the power of gathering in it too. क्या What? संगठन की शक्ति होती है तो उमंग उत्साह आता है। When there is the power in the gathering, there is zeal and enthusiasm. नहीं तो अकेले पड़ जाते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं। Otherwise, when someone is left alone, he becomes dejected. स्मृति का एक धागा ज्यादा मजबूत होगा या स्मृति के स्नेह के अनेक धागे मिक्स किए जाएंगे वो ज्यादा मजबूत होंगे। Will a single thread of remembrance be strong, or will it be strong when many threads of love of remembrance are joined together? तो याद माने स्नेह, So, remembrance means love. एक के प्रति याद, एक के प्रति स्नेह, The remembrance of the one, the love for the one. संगठन में जितना ये स्नेह पक्का होगा, संगठित होगा, उतना माया का कोई प्रभाव पड़ नहीं सकता। The firmer and united this love is in the gathering, the influence of Maya won't be able to affect us to that extent. जब ढीले हो जाएंगे When you become loose, तो माया अपना अचानक वार करेंगे। Maya will attack suddenly. वैसे भी बोला है इस ड्रामा में, ये नूद है, जो भी होता है। As such, it has been said, it is preordained in this drama. Whatever happens, कब होता है? when does it happen? अचानक होता है। It happens all of a sudden. This year, the means of progress, the programs of Yog Bhatti and the Bhatti of Dharana are required everywhere in all the important places. In this way, conduct a program of Bhatti group-wise at every place. Avyakt Vani dated 10th February 1975, page 65, end. अकेला धागा जल्दी टूट जाता है, A single thread breaks quickly. संगठित रूप से काम किया जाता है तो कई धागे मिला दिए जाएंगे स्मृति की डोरी के, तो एकाग्रता बढ़ जाएगी, काम जल्दी होगा। If the work is done collectively and many threads of the string of remembrance are joined together, the power of concentration will increase
and the task will be accomplished soon. Make the atmosphere very powerful. People should feel as if they are going to a living temple. The atmosphere should be of such spiritual fragrance that it attracts souls from far away. The atmosphere can attract the souls a lot. When the atmosphere becomes spiritual, all the other issues will be resolved automatically. Everyone will have one opinion and become constant. Then, Maya won't come either. It is because the atmosphere will become powerful. To make the atmosphere powerful, conduct the programs of remembrance and organize the classes of spiritual chit-chat amongst yourselves for progress. Avyaktavani dated 4th January 1982, page 216, beginning. जैसे कभी कभी याद में ये अनुभव किया होगा You must have experienced while being in remembrance कि संगठित याद में ऐसा वायुमंडल बन जाता है the atmosphere becomes such while being in collective remembrance कि बाप की याद के अलावा और कुछ भी याद नहीं रहता that you don't remember anything else except the remembrance of the Father. ऐसे ही वो याद का एक अस्त्र है जो सबकी बुद्धि को आप समान बना देता है Similarly, that remembrance is a weapon which makes everyone's intellect equal to him. जैसे विवेकानंद का मिसाल देते हैं अमेरिका में Just like the instance of Vivekananda is given that in America, भाषण करते समय उन्होंने सबकी बुद्धि को ऐसा आकर्षित किया कि एक तरफ भाग खड़े हुए अचानक और सारी पब्लिक उनके पीछे भागने लगी while giving a speech, he attracted everyone's intellect in such a way that when he suddenly ran towards one side, the entire public started running after him. तो ये एकाग्रता की स्थिति है So, this is the stage of concentration जो संपूर्ण रूप से आकर्षित करती है that attracts others completely. The fort stays strong through the gathering of one another. If there isn't full cooperation of even one brick or stone in the fort's wall, the fort can't be safe. If it shakes even slightly, it will become weak. Someone might say there is just one brick missing, but the weakness spreads everywhere. Avyaktavani dated 17th May 1972, page 280, beginning. अकेले रह करके जो पुरुषार्थ किया जाता है संसार के बीच में रह करके जो पुरुषार्थ किया जाता है उसमें माया ज्यादा इंटरफियर करती है The Purusharth that you make while being alone, the Purusharth that you make staying alone amidst the world, Maya interferes more in it. और संगठित होकर के संगठन के अंदर रह करके जो पुरुषार्थ किया जाता है उसमें माया उतना इंटरफियर नहीं कर पाती है And the collective Purusharth that you make in the gathering, Maya isn't able to interfere that much in it. तो अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं Now, the Purusharth that you are making, जिन बच्चों को बाबा ने चुना है वो बच्चे संन्यास मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं the children whom the Father has chosen, do they belong to the path of renunciation or do they belong to the household path? एडवांस में किन बच्चों को चुना है Which children has he chosen in the advanced knowledge? प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चों को चुना है ना He has chosen the children of the household path, hasn't he? तो प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चे अभी दुनिया में बिखरे हुए हैं या उनको संगठन मिल रहा है Now, are those children scattered in the world or are they receiving a gathering? हैं? हैं? बिखरे हुए इसलिए वो माया का असर उनके ऊपर ज्यादा होता है They are scattered. This is why Maya has more influence on them. आप खड़े क्यों हैं? आप आगे बैठ जाइए To the student, why are you standing? Come and sit down.
हाँ, तो जो बिखरी हुई आत्माएं हैं उनमें उतनी अभी शक्ति नहीं आ रही है। Yes. So, the souls who are scattered aren't receiving that much power. शक्ति कब आएगी? When will they receive it? ये नियम है। There is a rule. संघौ शक्ति कलौ युगे। There is power in a gathering in the Iron Age. कलयुग में भगवान भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। In the Iron Age, even God cannot do anything alone. भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। God can't do anything alone. कौन सी शक्ति कार्य करेगी? Which power will work? संगठन की शक्ति कार्य करेगी। The power of the gathering will work. You can cope well under any circumstance through everyone's yoga and when everyone devotes time. It will happen only when everyone has one thought. If all of you have one thought of good feeling, that it has to happen anyhow, it is then that it can happen. This is a blessing. It should be according to the law and you should have a big heart too. Not just law. Have a big heart and then follow the law. Everyone should have just one thought, that it has to happen. Have no question like why or what. Just think, it has to happen. So, everything will become easy through this method. Avyaktavani dated 24th March 2009, page 6, beginning. ब्राह्मण अगर संगठन में बैठ करके याद करें, मुरली सुने, तो ज्यादा अच्छा असर पड़ता है। The Brahmins remember him and listen to the Murli in a gathering. It has a better impact. ज्यादा पुरुषार्थ बनता है। They make better Purusharth. ज्यादा ऊंचा पद बनता है, क्योंकि वाइब्रेशन सुधारा। संगठन में रहकर They receive a higher position. It is because they reformed the vibrations by staying in the gathering. Such critical time has to come that only the power of remembrance will become the means of safety. Now, the stage of ordinary remembrance cannot become the means of your safety. Any kind of defeat from Maya or the attack of a person or atmosphere will deceive those who have ordinary remembrance. This is why Bap Dada is giving indication to all the children beforehand. Make the atmosphere of powerful remembrance. Avyaktavani dated 21st November 1984, page 24, end. नई दुनिया बनाने वाले कौन होंगे? Who will establish the new world? आखिरी नई दुनिया बनाने वाले कौन होंगे? Who will establish the new world in the end? और नई दुनिया बनाने में जो फेल हो जाएंगे वो कौन होंगे? And who will fail in establishing it? जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे वो आखिरी फिर भी नई दुनिया की स्थापना में हमारे अंत तक सहयोगी बनेंगे और बाकी सब वो सब विरोध करेंगे। The Suryavanshis and the Chandravanshis will still become your helpers in the task of establishment of the new world even till the end. And all the rest will oppose you. डट के विरोध करेंगे, भले एडवांस की बीज रूप आत्माओं में क्यों न हो। They will oppose you vehemently, even if they are the seed form souls of the advanced knowledge itself. वो बीज रूप आत्माएं आधार मूर्त जड़ों में जाकर के मिक्स हो जाएंगी, उनको सहयोग देंगी। Those seed form souls will collude with the root form souls and help them. क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी है। It is because they lack knowledge. तो जितना जो कुछ टटपुटिया ज्ञान है उन कच्चे बच्चों में वो उनको ज्ञान की पावर भर देंगी। So, those weak children will fill them with the power of knowledge, the little amount of knowledge they have. और आधारभूत तो दुनिया से अभी ही मिल रहे हैं। And the root form souls are colluding with the people of the world even now. जो बेसिक वाले हैं वो अभी भी कहाँ मिल रहे हैं? With whom are those of the basic knowledge colluding now? जैसे दुनिया की चाल है, दुनिया की रमक है, उस भक्ति मार्ग में वो मिक्स होते जा रहे हैं। As is the tendency and dazzle of the world, they are joining with that path of bhakti.
तो राज्य सत्ताधीश दुनिया वाले, राज्य सत्ताधीश बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया वाले, और राज्य सत्ताधीश एडवांस में जो भी विधर्मी हैं, वो सब मिलकर के एक हो जाएंगे। So, the political leaders of the world, the political leaders of the basic Brahmin world, and the Vidharmi political leaders in the advanced knowledge, all of them will collaborate. क्या? What? वो सब दुश्मन बनेंगे। All of them will become your enemies. इतना बड़ा हुजूम दुश्मन बनेगा, Such big crowd will become your enemy. और तुम मुट्ठी भर थोड़े से बच्चे वो नई दुनिया स्थापन करेंगे। And you few handful of children will establish the new world. तो क्या ऐसी शिफ्ट होगी तुम बच्चों में जो नई दुनिया स्थापन कर लेंगे और वो नहीं कर पाएंगे? What such speciality will you children have that you establish the new world and they won't be able to do that? एक बाप दूसरा न कोई। Student, one father and no one else. One father and no one else? माने एक बाप के स्नेह में पिरोए हुए होंगे और कोई से स्नेह करने वाले आजू बाजू वालों से माने स्नेह का धागा एक के साथ बंधा हुआ होगा, ज्ञान का धागा एक के साथ बंधा हुआ होगा। It means you will be threaded in the love of the one father. You won't love anyone. What about those beside you? You won't love those who are beside you. It means the thread of love and knowledge will be tied with the one. एक होता है लव और एक होता है ला। One thing is love and the other is law. ला माना ज्ञान और लव माना याद, स्नेह। Law means knowledge and love means remembrance, affection. तो ये ज्ञान योग का धागा एक के साथ बंधा हुआ होगा। So, this thread of knowledge and yoga should be tied with the one. उस एक धागे में हम बंध करके रहने वाले हैं, हम और किसी तरफ देखने वाले नहीं हैं। माना You stay tied in that one thread. You aren't those who look anywhere else. What does it mean? माना हमारा संगठन इतना मजबूत संगठन होगा, भले थोड़े से मुट्ठी भर बच्चे होंगे, जो दुनिया में और किसी का, किसी धर्म पिता का, धर्म का इतना मजबूत संगठन नहीं हो सकता। It means your gathering will be so strong that though there will be a handful of children, there can't be such a powerful gathering of any religious father or any religion in the world. इसलिए बोला ये पांडवों का किला ऐसा मजबूत किला रूपी संगठन बन जाएगा कि एक भी विकारी इसमें पांव भी नहीं रख सकेगा। This is why it was said, the fort of the Pandavas becomes such a powerful fort in the form of gathering that not a single vicious soul will even be able to step in it. भारत के राजाएं हार क्यों खाते रहे? Why did the kings of Bharat keep facing defeat? हैं? कोई जयचंद निकलते रहे और धोखा देते रहे। Student replies, yes, some or the other turned out to be Jaichand, that is a traitor, and kept deceiving you. Jaichand, name of one of the biggest traitors in Indian history. ऐसे जयचंदों से स्नेह भी तो हमने ही लगाया होगा। You yourself would have developed attachment for such traitors. जब जानते हैं ये जयचंद है, ये हमारे कुल के नहीं है, तो उनसे मोह हट जाना चाहिए। When you know that this one is a traitor and he doesn't belong to your clan, you should break your attachment for him. The test papers that you come across while moving ahead in service are also the means to make you move ahead. It is because
You make use of your intellect and you pay special attention to staying in remembrance. So, this also becomes a special lift. You always have this in your intellect. How can I make the atmosphere powerful? No matter how big a form an obstacle takes on, you elevated souls will certainly be benefited through it. That big form also becomes small through the power of remembrance. Avyaktavani dated 27th February 1985, page 201, beginning.